Hi, welcome to the next one. Now we are doing Cobb Douglas. बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, बहुत बारी आपने पहले भी किया हुआ है. Cobb Douglas actually in fact is the first function that you guys start solving. तो इसलिए आपने इसको तो फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो में भी किया हुआ है. But let's still again go back to it. ठीक है, इसको भी हम वैसी स्टेप से करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने बाकी फंक्शंस किए हैं. हमें पता है इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज x1c x2d and that is subject to, let's say, p1 x1 plus p2 x2 is equal to m. हमें पता है कॉब डगलस का मतलब होता है कॉन्वेक्स आइसीस. कॉन्वेक्स आइसीस को जब हम रफ में बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, टेंजेंसी पे. So the equilibrium condition for a Cobb Douglas is tangency. I'm hoping that I don't have to go deep into it क्योंकि ये आपको already समझ में आता होगा. हम लोगों ने करा था. You know, the equilibrium can happen at 1, E naught 2, but 1 and 2 are on a lower IC with the same income. तो आप क्यों consume करोगे? तो आप कहाँ पे consume करोगे? E naught पे. So equilibrium कहाँ पे होता है? टेंजेंसी के ऊपर. सो टेंजेंसी का कंडीशन हो गया MRS इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो. अच्छा, यू नो आई हैव सेड दिस बिफोर बट आई वांट टू पॉइंट इट आउट अगेन. MRS जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है. सो MRS इज एक्चुअली द मॉड वैल्यू ऑफ द स्लोप. सो MRS इज ऑलवेज पॉजिटिव. P1 by P2 is also always positive. So इसको ना जनरल फॉर्म से ही पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके अंदर वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे. So MRS is mu1 upon mu2, which is equal to the price ratio P1 by P2. So let's find out mu1 and mu2. So mu1 is C x1 C minus 1 x2 raised to power d upon d x1 C x2 d minus 1 is equal to P1 by P2. Now what has gotten cancelled? This will get cancelled and this will become 1. This will get cancelled and this will become 1. So I get C by D x2 by x1 which is equal to P1 by P2. Can I write it as C by D x2 is equal to P1 x1 upon P2? ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ x2 is equal to d by c into p1 by p2 into x1. We are given that the price ratio is m is equal to p1 x1 plus p2 x2. अब मैं x2 की जगह क्या ये वैल्यू डाल सकती हूँ? I can. So that is d by c into p1 by p2 x1. इसको हमने इसके साथ कैंसिल करा. ठीक है, आई एम टेकिंग p1 x1 कॉमन, देन आई एम गेटिंग 1 प्लस d by c which is nothing but c plus d upon c into p1 x1 is equal to m, or I can write x1 is equal to c upon c plus d the whole into m by p1, and x2 is what? x2 is d by c into p1 by p2 into x1 which is nothing but c upon c plus d into m by p1. This p1 gets cancelled, this c gets cancelled, which means it is nothing but d upon c plus d into m by p2. तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्म. दिस इज आवर जनरल फॉर्म. ओके, जनरल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो. बट लेट्स टेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट विद वैल्यूज. लेट्स से आई हैव अ कर्व लाइक x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 is equal to 600. First step, convex. Second step, condition, which is tangency. Third step, apply the tangency. MRS is equal to the price ratio. MRS is 2x1 x2 square upon 2x1 square x2 is equal to 2 by 3. This 2 gets cancelled, this x1 gets cancelled with a square, this x2 gets cancelled with a square. So I get x2 by x1 to be equal to 2 by 3,
और x2 is equal to 2 by 3 x1. So can I write 2x1 plus 3x2 की जगह 2 by 3 x1 is equal to 600. 3 gets cancelled, which means x1 is equal to 600 by 4, which is 150, and x2 is equal to 2 by 3 x1, which is 100. So this is my equilibrium bundle, 150, 100. इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? We'll make our budget line. The budget line will be 300 here, 600 by 2, 200 here, 600 again by 3. Our ICs, our IC and our ICs, and this point will be 150, 100. Right? अब आप जितने मर्जी कॉब डगलस के ऐसे फंक्शंस ले सकते हो. I can take a Cobb Douglas function as x1, x2, anything, x1 square, x2, x1, x2 square, x1 to 1 by 3, x2 2 by 3, x1 cube, x2, x2, x1, x2 cube, whatever, any of these things. So any function which is of the general form x1c, x2d is a Cobb Douglas, and a Cobb Douglas has this treatment in which we solve at tangency, and that's our Cobb Douglas functions. In the next video, I will do king dices. They are extremely important. So then don't jump into the next video as soon as you finish this one. Take a deep breath. वो वाले थोड़े complicated हैं, थोड़ा time लगेगा समझने के लिए. That's why allow yourself some time. थोड़ा break लेके फिर शुरू करना. All right? Thank you.